In this video, we are going to start the new chapter, that is locomotion and movement. And the first topic of this chapter is the types of movement. So, दो words है, isn't it? दो. One is movement and second one is locomotion. So, first is movement क्या है? तो movement, all living organisms exhibit the wide range of movements. And movement is a significant feature of all living organisms. जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है तो उनका मूवमेंट इज द सिग्निफिकेंट फीचर है एंड पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द मूवमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज क्या कहा कि ऑल लिविंग मूवमेंट मूवमेंट is the significant feature. Significant feature. Feature मतलब characteristics of all living organisms. All living organisms. That is first. क्या कहा? कि movement is the significant feature of all living organisms. Important characteristic है movement करना, show करना. अब कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स. जितने भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं possesses all animals and plants possesses wide range of movement. That is the second importance. मतलब अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स possesses wide range of movements. तो कौन से मूवमेंट्स होते हैं वाइड रेंज? कौन से हैं? कौन से स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले फ्लैजेला. Flagella is used. Then we heard the cilia. Then tentacles. And then in our body, human में क्या होता है? तो limbs. So these are the structures present in different organisms which are responsible to show the movement and locomotion. उसमें से सबसे पहला cilia. Cilia कहाँ होता है? तो in paramoecium. कौन सा ऑर्गेनिज्म? In paramoecium. This cilia is used for what? This cilia is used for the movement of food. उनके बॉडी के अंदर फूड का मूवमेंट करने के लिए मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स. That is the first function carried out by this cilia. मतलब cilia in paramoecium is responsible for the movement of food through cytophags. As well as paramoecium में cilia is also used for locomotion. अब नया वर्ड आया locomotion. Locomotion मतलब movement is different and locomotion is different. I am doing this, मतलब change in body posture. But this is not. This is the movement. ये movement है. मैं through limbs मैं अपने body के posture change कर रहा हूँ. This is movement. But with the help of the hind limbs, when I change the place, जब मैं place change करूँगा, like that. This is the voluntary movement and उसे हम कहेंगे locomotion. So पहले clear cut difference understand कर लो कि movement क्या है, locomotion क्या है. Locomotion मतलब to change the place. And movement मतलब just I am changing the limbs, body posture change हो रहा, but that is not resulted into the locomotion. So first, cilia, paramoecium, used for the movement of food through cytophags first, and this is also used for locomotion. Now second, tentacles. Tentacles in hydra. In hydra, tentacles are used. किसके यूज होते हैं? Tentacles carry out the movement, and because of that movement, it's used in hydra. Tentacles are used to capture its prey.
टेंटेकल्स एक स्ट्रक्चर रहता है which show the movement and capture the prey. So in Hydra, tentacles is used to capture its prey, and it is also used for and also used in locomotion. Locomotion में भी यूज होता है. Then third, limbs. Limbs in humans हमारे इसमें limbs in humans क्या करते हैं? Limbs in humans जैसा कि मैंने कहा change the body posture. So limbs in humans is used to change the body posture. To change body posture. ह्यूमन में और कौन से मूवमेंट है? तो movement of jaw, that is one movement. Movement of tongue is another movement. Movement of tongue. Then movement of eyelids, that is another movement. Movement of eyelids. These are the movements common in human beings. हमारे इसमें होते हैं ये movements. But मैंने कहा कि when there is a change in place, when there is a change in place, change in place, ऐसी मूवमेंट जो चेंज प्लेस को चेंज करती है, that voluntary movement, change in place, that is voluntary movement, voluntary movement, उसे क्या कहते हैं? That voluntary movement is results into the locomotion, उसे कहेंगे locomotion. जैसे मैंने कहा कि movement of tongue movement है, but the movement of hind limbs change in the place, that is locomotion, and that is what change in place, voluntary movement, and उसे क्या कहते हैं? Locomotion. So this is clear cut, locomotion and movement. अब देखो, अब लोकोमोशन जो है कि ऑल मूवमेंट्स जो है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. तो दोनों में डिफरेंस अगर करना चाहोगे तो दैट इज बिकम ओवर पर्टिकुलर वर्ड. जितने भी लोकोमोशंस है वो मूवमेंट है, बट जितने भी मूवमेंट्स है वो लोकोमोशन नहीं है. तो क्या है? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. कौन सा? ऑल लोकोमोशंस, all locomotions are movement, but all movements are not locomotion. But all movements are not locomotion. Right? This is very important. सबके सब लोकोमोशन एक मूवमेंट है, बट पूरे के पूरे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है. जैसा एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ टंग, प्लेस चेंज नहीं होती है, दैट इज द मूवमेंट ओनली. बट मूवमेंट ऑफ हाइंड लिम्स टू चेंज द प्लेस, दैट इज लोकोमोशन. इसलिए मैंने क्या कहा कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट. ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. अब नाउ कि लोकोमोशन का यूज क्या है? इसलिए ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट द लोकोमोशंस. नंबर वन, इसलिए लोकोमोशन करते हैं. नंबर वन, फॉर टू कैप्चर द फूड. सेकंड, शेल्टर. थर्ड, मेटिंग करने के लिए. फोर्थ, टू फाइंड आउट द ब्रीडिंग ग्राउंड्स. जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो मूव होते हैं, लोकोमोट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. एंड दूसरा, टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज. एनिमीज से बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकोमोशन. नाउ उसके बाद की टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन से मूवमेंट्स के टाइप हमारे बॉडी में होते हैं, एंड दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर डूइंग दिस इंट्रोडक्शन. कौन सा? टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन से मूवमेंट्स होते हैं. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. अनदर इंपॉर्टेंट, which are the types of movements. So in human being, the cells exhibit three main types of movements. Human beings exhibit हमारे में three important types of movements होते हैं.
types of movements. Number one is ciliary movement. Number one is amoeboid movement. We'll go sequentially. Is amoeboid movement, right? Number two, ciliary movement, and number three is muscular movement. तो कितने movements है? In human being or the human being exhibit three different types of the movements. Number one, अमीबाइड मूवमेंट, जैसे कि अमीबा में होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, स्ट्रीमिंग इन द प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि हम स्विम करते हैं ना, तो दैट इज स्ट्रीमिंग इन प्रोटोप्लाज्म, दैट इज द अमीबाइड मूवमेंट. तो हमारे ह्यूमन बीइंग में देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स. फर्स्ट वन इज अमीबाइड मूवमेंट, सेकंड वन सीरियरी मूवमेंट एंड थर्ड वन इज द मस्कुलर मूवमेंट्स, राइट? तो अमीबाइड मूवमेंट हमारे बॉडी में कौन से सेल शो करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन. सो अमीबाइड जो मूवमेंट होती है, तो इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमंस, स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक कौन से स्पेशलाइज्ड सेल लाइक मैक्रोफेजेस, फर्स्ट मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स. Leukocytes मतलब Ws. Leukocytes exhibits the amoeboid movement. And कौन सी amoeboid movement? The streaming in the protoplasm, right? Streaming in the protoplasm. These two specialized cells, हमारे बॉडी में जो दो specialized cells है, like macrophages and leukocytes, कहाँ होते हैं? In blood. Show the amoeboid movement. Amoeboid movement मतलब streaming in protoplasm. Protoplasm मतलब cytoplasm. Streaming in protoplasm in unicellular organism like in amoeba. वहां पे amoeboid movement है. तो वही amoeboid movement हमारे बॉडी में है. कौन से specialized cells like macrophages and leukocytes. Second one is the cytoskeletal element. कौन सा? Cytoskeletal elements like microfilaments exhibits or shows amoeboid movement, right? So first amoeboid movements कौन सी है? तो streaming in protoplasm as in unicellular organisms like amoeba, इसलिए उस मूवमेंट को कहते हैं amoeboid movement, right? कौन से एग्जांपल्स है? तो दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोट किए हैं कि इन ह्यूमन बीइंग स्पेशलाइज्ड सेल्स. कौन से? नंबर वन इन द मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्लड एग्जिबिट और शो कौन सी मूवमेंट? अमीबाइड. दूसरा एग्जांपल द साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट, these also exhibit the amoeboid movement. अब नाउ सेकंड वन इज द सीलियरी मूवमेंट. हमें पता है सीलियर मूवमेंट मतलब सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दैट, एंड उनका जब कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू द मूवमेंट्स. सो सीलियरी मूवमेंट कहाँ होती है हमारे बॉडी में? इट इज प्रेजेंट इन इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स. इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स है उसमें कुछ इंटरनल ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है, उनमें सीलिया होता है, जैसा कि ऐसा, एंड दिस फिर सीलिया होता है, एंड उससे थ्रू दैट ट्यूब देयर इज अ मूवमेंट ऑफ, राइट? तो उसे कहते हैं सीलियरी मूवमेंट. तो कहाँ होती है सीलियरी मूवमेंट? तो सीलियरी मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज फाउंड इन इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स. कौन से? फॉर एग्जांपल ट्रकिया. एंड हमें पता है कि ट्रकिया इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स. सीलियरी मूवमेंट से क्या होता है? सीलियरी मूवमेंट results into
results into removal of dust particles. Dust particles. Cilia का जो coordinated movement होता है that is used to remove the dust particles or foreign substances from एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है या फॉरेन सब्सटेंसेस है तो दैट शुड नॉट रीच टू द लंग्स, अदरवाइज आवर लंग्स में गेट डैमेज, लंग्स खराब हो सकती है। इसलिए जो सीलिया होते हैं ट्रकिया में, दैट सीलिया इज हेल्प, सीलियरी मूवमेंट जो होती है, दैट सीलियरी मूवमेंट हेल्प्स टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, निकाल देती है, और आल्सो फॉरेन पार्टिकल्स को भी निकाल देती है। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑर्गन कौन सा, दैट इज द ट्रकिया। Another example of this internal organs, that is passage of ova through female reproductive tract to reach to the uterus. Uterus तक लेने के लिए जो ओवा बनता है उसको लेके जाता है, and that is also the ciliar movement. So ciliar movement is used for the passage of ova through female reproductive tract. Female reproductive tract. Right. So these are the two examples which show the ciliary movement in our body. These are the two examples which show the amyloid movement in our body. And now the last, muscular movement. जिस movement के लिए muscles are responsible. तो हमारे इसमें कौन सा है? तो हमारे इसमें फर्स्ट है movement of jaw. Movement of jaws. First. Second, movement of eyelids. Movement of eyelids. Then movement of tongue. Movement of tongue. And then movement of limbs. Movement of limbs. So these are all the movements present in the human beings, which we call it as a muscular. Movement of tongue, movement of eyelids, movement of jaws, movement of limbs. So उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए there is a need of muscle. And muscles, why muscles are used in this movement? Because these muscles possess a very important property, and that is the contractile property. So muscles possess contractile property, and because of that contractile property, the humans can show the different types of the muscular movement. And when there is a movement of hind legs, प्लेस चेंज होती है, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन, राइट, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। सो हियर क्या क्या लर्न किया हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, difference between the locomotion and movement, right? So in the next video we'll discuss the different types of muscles.